Good morning and a warm welcome to all dear students. Let us begin. Today we will discuss gradient of scalar point function and directional derivative. So let us discuss this example. If r bar equal to xi plus yj plus zk, then show that grad r equal to 1 upon r times vector r bar. And second thing which we have to show is grad 1 upon r equal to minus 1 upon r cube times vector r bar. So these two things we have to prove. Yesterday we have discussed one example based on gradient. Do you remember that? What is that example? Del r raised to n, del operating on r raised to n equals to n r raised to n minus 2 times r bar vector. You remember this example? So it is on the same lines actually, because what is grad? Grad r, what does it mean? Del operating on r, and del operating on r raised to n, we established it yesterday itself. It is n r raised to n minus 2 times r bar vector. Is it? So if you compare del r with del r raised to n, what is the value of n? Yes, anyone? What is the value of n? What is the value of n? Am I audible, dear students? Hello? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Then what is the value of n? n ची किंमत किती आहे? डेल आर को डेल आर रेस टू एन से कंपेयर करो, n का वैल्यू कितना है? 2. n की वैल्यू 1 है ना, r रेस टू 1 है ना. डेल आर रेस टू n, n इज पावर ऑफ r. यहाँ पर कितना पावर है r का? 1. So by this formula, directly 1 r raised to 1 minus 2, n को 1 assume करके इसका आंसर ढूंढते हैं. It will be r raised to 1 minus 2 is minus 1, r raised to minus 1 times r bar vector. So it is 1 upon r times r bar vector. So that is r bar upon r. So this may be asked directly. So you have to remember this basic formula, and if it is asked in multiple choice, then you can utilize this formula directly. Taking n is equal to 1, you can obtain the answer by this formula. Learn this formula by heart. Del r raised to n equals to n r raised to n minus 2 times vector r bar. So show that. Now the question is show that. That means they want us to prove. This is by formula that can be achieved for multiple choice questions. But when it comes for 5 marks and they ask us to show that, then we have to go step by step. We have to prove. So gradient of r bar is xi plus yj plus zk,
that is in general position vector of the point xyz in the xy plane. R bar represents position vector of the point x comma y comma z. What does R indicates? R indicates magnitude of R bar. Magnitude of R bar is its distance from origin. So what is its distance from origin? Under root x square plus y square plus z square. So squaring both sides for the sake of convenience, we take square on both sides and we are getting r square is equal to x square plus y square plus z square raised to 1 upon 2's square. 2 and 2 cancels and we get r square equal to x square plus y square plus z square. R square is x square plus y square plus z square. Up to this point, is it clear to all of you? R square Yes, is x square plus y square plus z square. Now we want del r. So del r is I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z operating on r. So what it is? Dou r by dou x times vector I plus dou r by dou y times vector j plus dou r by dou z times vector k. So to obtain gradient of r, that is del r, we have to find these three things: r suffix x, r suffix y, r suffix z. So this is the equation which will help us to obtain partial derivative of r with respect to x. This expression is homogeneous in x, y and z. That means it is same for y as it is for x, it is same for z as it is for y. So it is homogeneous. R square is x square plus y square plus z square. तर डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक व्हेरिएबल जरी काढलं तरी त्याला बघून दुसऱ्या कसं काढता येईल, म्हणजे लगेच काढता येईल, लगेच सांगता येईल, त्याला वेगळं करण्याची गरज नाही आहे, कारण ते होमोजिनियस आहे, त्याचा सेम फॉर्म आहे एक्स वाय आणि झेड व्हेरिएबलसाठीचा. तर लेट अस डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन. आर स्क्वेअर डिपेंड्स ऑन आर एंड आर डिपेंड्स ऑन एक्स वाई जेड. ये डिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल सबको समझ में आ रहा है. आर का स्क्वायर किसका फंक्शन है? बेसिक आर का. और आर किस पे डिपेंड करता है? एक्स वाई जेड पे. ये वेरिएबल्स का रिलेशन क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes. So differentiating both sides partially with respect to x. पहले आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर. पहले आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर इज 2r इंटू डो आर बाय डो एक्स. हम क्या कर रहे हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लगा रहे हैं दोनों साइड्स पर. डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये डायरेक्ट नहीं होगा, पहले आर स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू आर लेना होगा और फिर आर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना होगा. आई होप ये आइडिया आपकी क्लियर है. तो आर स्क्वायर का पहले विथ रिस्पेक्ट टू आर है 2r इंटू आर स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू आर इज 2r इंटू आर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो 2r dou r by dou x equals to dou by dou x of x square plus y square plus z square. Partial derivative of x square with respect to x is 2x. Of y square with respect to x is 0. Of z square with respect to x is 0. So it is
2x plus 0 plus 0, it is 2x. So what are we getting? 2 gets cancelled, and this r we take to right hand side. So it is dou r by dou x is equal to x upon r. Is this equation clear to each one of you? Dou r by dou x equal to x upon r. ह्याच्यावर मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात, सो प्लीज बी व्हेरी केअरफुल ऑफ दिस. Partial derivative of r with respect to x is x upon r. Is this clear to all of you? Shall I proceed further? Yes, ma'am. Yes. Similarly, जैसा वो r जैसा x के लिए वैसा ही y के लिए है, तो डो r बाय डो y क्या आ जाएगा? y अपॉन r. लेट मी एग्जीक्यूट इट फॉर यू. डो बाय डो वाई चला रहे दोनों साइड्स पर, डो बाय डो वाई चला रहे हैं दोनों साइड्स पर. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, चेन रूल लगानी पड़ेगी. पहले आर स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू आर और फिर आर का विथ रिस्पेक्ट टू वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इट इज डो बाय डो आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू डो आर बाय डो वाई. ये हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई 0, वाई स्क्वायर का 2y, जेड स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू वाई 0. तो व्हाट आर वी गेटिंग? लेफ्ट हैंड साइड इज आर स्क्वायर चा विथ रिस्पेक्ट टू आर इज 2r, डो r बाय डो y equals to 2y. This is 2y. 2 cancels. R चा partial derivative with respect to y is y upon r. Any questions, dear students? Shall I proceed further? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ये partial differentiation execute करते हैं ना, बहुत ज़रूरी है. तो ये मिल गया है. डो r बाय डो x इज x अपॉन r, डो r बाय डो y इज y अपॉन r. तो सिमिलरली डो r बाय डो z विल बी z अपॉन r. तो दिस आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्रेडियंट. ग्रेड r इज I डो r बाय डो x प्लस j डो r बाय डो y प्लस k डो r बाय डो z. So we have found out these values. Rx is x upon r, ry is y upon r, rz is z upon r. See, dou r by dou x is also written as r suffix x, and that is why I am saying rx. By rx I mean partial derivative of r with respect to x. तर यांची किंमत इथे ठेवली आपण. x अपॉन आर टाइम्स वेक्टर i प्लस y अपॉन आर टाइम्स वेक्टर j प्लस z अपॉन आर टाइम्स वेक्टर k. तीनों के पास r कॉमन है, डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया एंड न्यूमरेटर को कंबाइन कर लिया. xi प्लस वाई जे प्लस जेड के. बट डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज xi प्लस वाई जे प्लस जेड के? व्हाट इज इट बेसिकली? R bar. Yes, r bar. So it is r bar upon r. Yes. So gradient of r is r bar upon r. Hence proved. अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो. Any questions? मैंने एक बार रिपीट किया ना स्टार्टिंग क्वेश्चन. R bar is given as xi plus yj plus zk, and we have to prove gradient of r is r bar upon r. Gradient of r is del r, del operating on r. Del r is I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z operating on r.
So we want dou r by dou x, dou r by dou y, and dou r by dou z. If r bar is xi plus yj plus zk, then r is under root x square plus y square plus z square. To make the differentiation more easy, we take square on both sides. So we get r square is equal to x square plus y square plus z square, and we differentiate this equation partially with respect to x, and we get x upon r. Similarly, we get partial derivative of r with respect to y as y upon r, and partial derivative of r with respect to z as z upon r. So with these three values, we substitute the values, and we take new denominator common because it is same. We get r bar upon r. I hope this is clear, and we can proceed further. Now let us go for gradient of 1 upon r. Now dear students, just now I have discussed that del r raised to n is n r raised to n minus 2 times r bar vector. Then del 1 upon r. Can we obtain del 1 upon r from this formula? Yes, ma'am. कैसे निकाल सकते हैं हम del 1 upon r इस फॉर्मूले से? R inverse. यस, वेरी गुड. 1 upon r को r raised to -1 लिख दो, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? -1. तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए. n रखा -1, n रखा -1. So it is, this value is minus r raised to -3 r bar. So it is r bar upon r cube with a minus sign. तो ये फॉर्मूला से एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ये आपको लर्न करके ऐसे डिराइव कर लेना है. ये इतना पूरा एग्जीक्यूट नहीं करना है, लेकिन ऑफलाइन में अगर शो दैट पूछते हैं तो फिर ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना पड़ेगा. तो कैसे उसको डिराइव करना है, रिजल्ट को देखते हैं. ग्रेड 1 upon r means del on 1 upon r. Del is I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z on 1 upon r. So that is I dou by dou x of 1 upon r plus j dou by dou y of 1 upon r plus k dou by dou z of 1 upon r. Now to perform this, we have to go by chain rule. To obtain partial derivative of 1 upon r with respect to x, chain rule चा वापर आपल्याला करायचा आहे. 1 upon r हा बेसिक कोणाचा फंक्शन आहे? r चा. इट इज अ फंक्शन ऑफ r एंड r डिपेंड्स ऑन x. तो इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो पहले इसका विथ रिस्पेक्ट टू r एंड देन r का विथ रिस्पेक्ट टू x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 1 अपॉन r का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r इंटू r का विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया चेन रूल से 1 अपॉन r का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. What is the derivative of r inverse with respect to r? What is the derivative of r inverse with respect to r? What is the inverse? What is the derivative of r inverse with respect to r? It is -1 r raised to -1 into dou r by dou x, isn't it? r raised to -1 चा डेरिवेटिव किती होईल? -1 r raised to -1 minus r raised to -2 into dou r by dou x. dou r by dou x ऑलरेडी काढून ठेवलेला आहे आपण, त्याची व्हॅल्यू इज x अपॉन r. सो इट इज माइनस r raised to -2 x upon r, minus x upon r
This is minus 2, so it will become plus 2 in the denominator, minus x upon r cube. Minus x upon r cube. So you see 1 upon r चा partial derivative with respect to x is minus 1 upon r square into dou r by dou x, which is minus 1 upon r square into x upon r. तर त्याच अनुषंगाने विथ रिस्पेक्ट टू y चं किती होईल? x च्या ऐवजी फक्त y, बाकी सगळं जशाला तसं. मॅम का ना रिपीट? मला कंप्लीट करू द्या, नंतर रिपीट करते मी. तसंच 1 अपॉन आर चा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू झेड किती होईल? मायनस 1 अपॉन आर स्क्वेअर इंटू झेड अपॉन आर. वायच्या ऐवजी झेड, बाकी सगळं जशाला तसं. तर इट इज आर क्यूब तिघांकडे आहे, कॉमन घेतला, अँड मायनस साईन तिघांकडे आहे, ती पण कॉमन काढली, आणि इट इज एक्स आय प्लस वाय जे प्लस झेड के विथ अ मायनस साइन इन ब्रॅकेट अँड डिवाइडेड बाय आर क्यूब. सो इट इज मायनस, दिस इज नथिंग बट आर बार, मायनस आर बार अपॉन आर क्यूब. So gradient of 1 upon r bar is del of 1 upon r. Gradient of 1 upon r is del operating on 1 upon r. This is the operator del. It should operate on 1 upon r. So it is I dou by dou x of 1 upon r plus j dou by dou y of 1 upon r plus k dou by dou z of 1 upon r. We want derivative of this function with respect to x, y and z. First try to understand the dependence. 1 upon r depends on r and r depend on x, and we want derivative of this with respect to x. So we will have to use chain rule. आधी ह्याचा विथ रिस्पेक्ट टू आर काढायचा, इंटू आरचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करायचा, मल्टिप्लाइड बाय आरचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करायचं. तर ह्याची किंमत कशी काढणार? विथ रिस्पेक्ट टू आर 1 अपॉन आर म्हणजे आर इनवर्स, 1 अपॉन आर म्हणजे आर इनवर्स. तर आधी आर इनवर्सचा विथ रिस्पेक्ट टू आर इंटू आरचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ 1 अपॉन आर. आर इनव्हर्सचा डेरिव्हेटिव्ह, यू नो दिस, एक्स रेस टू एन चा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किती असतं इन जनरल? एन एक्स रेस टू एन मायनस 1. सो वी विल यूज दॅट फॉर्म्युला फॉर आर. सो इट इज मायनस 1 आर रेस टू मायनस 1 मायनस 1 इंटू डो आर बाय डो एक्स ॲज इट इज. सो इट इज मायनस आर रेस टू मायनस 2 डो आर बाय डो एक्स. डो आर बाय डो एक्स आपण काढून ठेवलेलं होतं एक्स अपॉन आर. सो फायनली इट इज मायनस एक्स अपॉन आर रेस टू प्लस 2 इंटू आर. इट इज मायनस एक्स अपॉन आर क्यूब. दिस इज मायनस एक्स अपॉन आर क्यूब मायनस वाय अपॉन आर क्यूब मायनस झेड अपॉन आर क्यूब. सो इट इज एक्स आय प्लस वाय जे प्लस झेड के डिवाइडेड बाय आर क्यूब विथ अ मायनस साइन. दिस इज आर बार and this is minus r bar upon r cube. Is this clear, dear students? These questions can be asked for 5 marks. If it is asked in multiple choice question, you just have to recall the basic general formula del r raised to n is n r raised to n minus 2 times r bar vector, and accordingly compare with n, find the value and substitute here and you will get the answer. इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई दिक्कत है? Shall I proceed further? Yes, ma'am. Yes. Now this is example which is application. Find the angle between the surfaces x square plus y square plus z square equal to 9 and z equal to x square plus y square minus 3 at the point 2 minus 1 2 in the direction of
I plus 2j plus 2k. Now try to understand the question. Find the angle between the surfaces. There are two surfaces. Surface S1 is x square plus y square plus z square is equals to 9. So this is a sphere. One of the surface is sphere, and this is another surface S2. Its definition is, now this z I will subtract on both sides. So the surface equation is x square plus y square minus z minus 3. So this is S1 can be written as x square plus y square plus z square minus 9. So this is point to be remembered. S1 will be subtracting 9 on both sides. Equation equation of the surface will be x square plus y square plus z square minus 9, and for this one it will be x square plus y square minus 3 minus z. These are two surfaces. My question is, does the point 2 minus 1 2 lie on both the surface? 2 minus 1 2 हा पॉइंट दोन्ही surfaces वर आहे का? x को 2 रखो, y को -1 रखो और z को 2 रखो और आंसर 0 आता है क्या? तो वो उस सरफेस पे रहेगा, क्योंकि वो सरफेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो 2 - 1 2 ये दोनों सरफेसेस पर है क्या? है मैडम. यस, वो दोनों भी सरफेसेस है. मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक सरफेस और ये दूसरा सरफेस, ये तो स्फीयर है, ये एक दूसरा सरफेस है. ये दोनों सरफेस इस पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सेकेंड सरफेस में भी एनी, तो वॉट एवर इट इज, दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट 2 - 1 2. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो इस पॉइंट पे जब वो इंटरसेक्ट करते हैं तो कितने एंगल पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितना एंगल बना रहे हैं वो, ये देखना. मतलब इट इज सेम एज इस पॉइंट पर नॉर्मल्स जो भी एंगल बनाएगी, वो एंगल बिटवीन टू सरफेसेस एट अ पॉइंट इज इक्वल टू the angle between two normals at that particular point. हे सगळ्यांना समजतंय का? प्लेन, दोन प्लेन्स मधला किंवा दोन सरफेसेस मधला अँगल कोणत्या पॉइंटवर इक्वल असतो, त्या पॉइंटवरती त्या दोन नॉर्मलच्या मधला अँगलला. सो दिस इज फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज सेकंड सरफेस. यू वेरी वेल रिमेंबर, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन रिप्रेजेंट्स नॉर्मल एट दैट पॉइंट. तो इसका ग्रेडियंट कितना आएगा? ग्रेडियंट निकालेंगे तो नॉर्मल मिल जाएगा, और उस इक्वेशन में वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस पॉइंट का नॉर्मल मिल जाएगा. तो ग्रेड F1 कितना होगा? I डो बाय डो एक्स ऑफ दिस, याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किती होईल? याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किती होईल? 2x प्लस 0 प्लस 0 मायनस 0. सो इट इज 2x. सो डेल F1 इज 2xi प्लस याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y किती होईल? 0 प्लस 2y प्लस 0 माइनस 0. इट इज 2y. 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk.
याचाच पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू झेड किती होणार 0 प्लस 0 प्लस 2z मायनस 0 इट इज 2z k. Del f1 represents normal to the surface and it is 2xi plus 2yj plus 2zk. या पर्टिक्युलर पॉईंटवर नॉर्मल काढण्यासाठी हा जनरल नॉर्मल आला, जनरल इक्वेशन नॉर्मलचा. या पर्टिक्युलर पॉईंटवरती काढण्यासाठी तो पॉईंट इन्सर्ट करायचा. एक्सला 2 ठेवा, वायला -1 ठेवा आणि झेडला 2 ठेवा. सो इट इज 2 into 2 is 4i, 2 into -1 is -2j, 2 into 2 is 4k. So this is normal to the surface S1 at the point 2 minus 1 2. Now normal to the surface at the point 2 minus 1 2 for the second surface. This is second surface. Its del, its gradient will denote normal. So what is gradient of second surface? Gradient of second surface del f2. Del f2 will denote normal to the second surface. दुसऱ्या सरफेसचं नॉर्मल हे त्याच्या डेल वरून काढता येईल. मग हा दुसऱ्या सरफेसचा इक्वेशन आहे. याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 2x plus 0 minus 0 minus 0. इट इज 2xi. या सरफेसचा विथ रिस्पेक्ट टू y 0 plus 2y minus 0 minus 0. इट इज 2y. याचाच पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू z 0 0 minus 1 0. इट इज -1k. तो डेल f2 निकाल लिया है हमने. उस स्पेसिफिक पॉइंट पे नॉर्मल निकाल लेते हैं वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके. x को रखा 2, 2 into 2 4, y को रखा -1 -2, z को रखा. z को रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि z वहाँ पर है ही नहीं. पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स. सो नॉर्मल to the surface x square plus y square minus z minus 3 at the point 2 minus 1 2 is 4i minus 2j minus k. Is this clear? दो सरफेसेस थे, दोनों पे डेल ऑपरेट करके दोनों के नॉर्मल्स ढूंढ लिए. अब नॉर्मल्स एट द स्पेसिफिक पॉइंट ढूंढ लिए. दो नॉर्मल्स के बीच में जितना एंगल रहता है उतना ही दो सरफेसेस के बीच में रहेगा. एंगल थीटा बिटवीन टू सरफेसेस एट अ पॉइंट इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स एट दैट पॉइंट and n1 and n2 are the normals at 2 minus 1 2 to the given surfaces. Therefore you remember dear students, a bar dot b bar dot product is ab cos of theta, which is modulus of a into modulus of b into cosine of the angle between them. तर ह्या फॉर्म्युलाचा उपयोग करून आपण थीटाची व्हॅल्यू काढणार आहे. So cos theta is dot product divided by magnitude of A into magnitude of B. These two are scalar quantities. So this formula you learn by heart. Cos of theta is A bar dot B bar divided by mod A bar into mod B bar. So this is normal to the first surface at this point. That is 4i minus 2j plus 4k. This is normal to the second surface at point 2 minus 1 2. So dot product with 4i minus 2j minus k divided by magnitude of this is square root of 4 square plus minus 2 square plus 4 square. Magnitude of this vector is 4 square plus minus 2 whole square plus minus 1 whole square. So how to perform this dot product? 4i minus 2j plus 4k into 4i minus 2j minus k
is a1 b1, so 4 into 4, a2 b2 minus 2 into minus 2, a3 b3 plus 4 into minus 1. So it is 16 plus 4 minus 4. 16 plus 4 minus 4 is 16. And this is 16 plus 16 is 32, and 32 plus 4 is 36. Square root of 36 is 6, and this is square root of 21. 16 आणि 4 20, 20 आणि 1 21, square root of 21. So this is cos of theta. So taking cos inverse on both sides, theta is cos inverse 8 upon, why? Because 8, 2 8s are 16, 2 8s are 16 and 2 3s are 6, 8 upon 3 square root of 21. So the angle between the two surfaces is cos inverse 8 upon 3 into square root of 21 at the point 2 minus 1 2. Is this example clear to all of you? Any questions? Shall I proceed further? मॅम ते आय जे आणि के चे व्हॅल्यू कसं ठेवलं? आई जे की वैल्यू कहाँ रखी हमने? आई जे की तो स्टैंडर्ड वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स. तो यहाँ पे 4 into 4, तो ये डॉट प्रोडक्ट लिया है ना, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, 4i माइनस 2j प्लस 4k, डॉट प्रोडक्ट विथ 4i minus 2j minus k. This is a vector, this is like b vector. Dot product a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. 4 into 4 16 plus minus 2 into minus 2 4 plus 4 into minus 1 is minus 4. This is how we perform dot product. Plus 4 minus 4 nullifies, and 16 plus 0 is 16. Is it clear? Shall I proceed further, dear students? Any questions? दो surfaces के बीच का angle at a particular point निकाल पाए हम gradient का concept use करके. और ये एक formula cos theta is n1 dot n2 divided by mod n1 into mod n2. Any questions, dear students? Shall I proceed further? Yes, ma'am. अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द कॉन्स्टेंट्स m and n सच दैट द सर्फेसेस. अब ये एक सरफेस है, इसमें m और n ढूंढना है. m और n की वो वैल्यूज सच दैट ये सरफेस इस सरफेस को ऑर्थोगोनल रहेगा. मतलब ये दो सरफेसेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो. ये तो पैरेलल हो गए. दो सरफेसेस, दिए हुए दो सरफेसेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, ऐसा m और n का वैल्यू ढूंढना है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो प्लेन होंगे, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए प्लेन के माध्यम से समझा रही हूँ. ये एक सरफेस है, इसमें m और n की वैल्यू ढूंढनी है कि ये सरफेस को, ये सरफेस में कोई अननोन वेरिएबल्स नहीं है, अननोन कॉन्स्टेंट्स नहीं है, इसमें है S1 सरफेस में है. ऐसे m और n ढूंढ कर निकालना है कि ये वाला सरफेस इस सरफेस को परपेंडिकुलर हो जाए. ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर. ये दोनों सरफेस के बीच में 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए. 1 - 1 2 इस पॉइंट पर. ऐसे m और n की वैल्यूज ढूंढना है. प्रॉब्लम समझ में आ गया सभी के? दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस में m और n कॉन्स्टेंट्स की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि दूसरे सरफेस को, दूसरे सरफेसेस 4x² plus z³ = 4, ये सरफेस इस सरफेस को परपेंडिकुलर हो जाए इस स्पेसिफिक पॉइंट 1 - 1 2 पर.
Question is clear, dear students? Shall I proceed further? Shall I Yes, proceed? ma'am. Yes. The point P 1 minus 1 2 lies on both surface. Definitely ये दोनों सरफेस एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और तभी वहाँ की ऑर्थोगोनलिटी की बात होगी. तो क्योंकि ये पॉइंट दोनों सरफेसेस पे है तो ये पहले सरफेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो x को 1 रखेंगे, y को -1 रखेंगे और z को 2 रखेंगे क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करता है, वो उस पर उस सरफेस पे है तो उसकी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा ही. तो वो पॉइंट्स सब्स्टिट्यूट कर दिए. m एक्स स्क्वायर को रखा 1 स्क्वायर 1 m इंटू 1 m, y को रखा -1, z को रखा 2, -1 इंटू z इज -2. So it is m minus 2n into -2 equal to m plus 4. x को रख दिया 1. So m plus 4 into 1 is m plus 4. So this is m minus 2n. Minus 2n into -2 is plus 4. So it is m plus 4n equals to m plus 4. M and m cancels on both sides and we get 4n equals to 4. Dividing both sides by 4, we get n equals to 1. तो वो पॉइंट उस सरफेस पे है. ये फैक्ट हमने यूज किया तो हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू तो मिल गई. तो उस एक कांस्टेंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसको इम्प्रूव करते हैं. हा पॉइंट ह्या सरफेस वरती पण होता तो त्याला सॅटिस्फाय करेल म्हणून तो त्याच्यात सबस्टिट्यूट केला आणि सबस्टिट्यूट केल्याच्या नंतर एन ची व्हॅल्यू भेटलेली आहे ती एन ची व्हॅल्यू इथे ठेवायची आणि हा नवीन इम्प्रूव्ड इक्वेशन आला ज्याच्यात एन निघून गेलेला आहे. तर हा आता φ1 हा पहिला सरफेस, हा दुसरा सरफेस. कॉन्स्टंट एकीकडे घेतलं आणि हा त्याचा त्या सरफेसचा एक्सप्रेशन आहे. तर हा एक सरफेस ज्याच्यात n1 ठेवून हा नवीन तयार झाला आहे आणि हा दुसरा सरफेस. हे दोन्ही ऑर्थोगोनल असले पाहिजे अशा m आणि n च्या किमती शोधायच्या. n तर सापडले आपल्याला, n इज 1. आता फक्त m साठी पुढची प्रोसिजर आहे. तर दोन्ही सरफेस मधला अँगल म्हणजेच त्यांच्या नॉर्मल मधला अँगल. φ1 ला नॉर्मल कशी काढणार? डेल φ1 करून. डेल φ1 I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z should operate on φ1. φ1 चा हा इक्वेशन आहे. डेल φ1 काढताना ह्याच्यावर डो बाय डो एक्स डो बाय डो बाय डो बाय डो झेड लावायचं आहे. तर ह्याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किती असणार आहे? याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किती असणार आहे? एम एक्स स्क्वायर का 2mx, एम एक्स स्क्वायर का 2mx, इसका 0 माइनस एम प्लस 4x माइनस एम प्लस 4 ये कोएफिशिएंट है x का तो इट विल बी माइनस एम प्लस 4. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x? माइनस एम प्लस 4. सो इट इज माइनस m plus 4. So give minus m minus 4, giving minus sign to both the terms. So this is partial derivative of φ1 with respect to x. With respect to y, how much it will be? y with respect to y इसका 0, इसका minus 2z, इसका 0 with respect to y. So it is minus 2z in totality. त्याचाच with respect to z किती होईल? याचा 0, याचा minus 2y, याचा 0. In totality it is minus 2y. Partial derivative of f with φ1 with respect to x
times I1 vector, I vector with respect to y times j vector with respect to z times k vector. So this is del phi 1. Del phi 1 denote normal to the surface S1, normal to the surface S1. ये हमने इधर ले लिया है, ये पूरा एक साइड पे लेना होता है. पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, राइट हैंड साइड को छोड़ना नहीं, उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके पूरा एक एक्सप्रेशन सरफेस की इक्वेशन होता है. पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड. phi 1 का नॉर्मल इस स्पेसिफिक पॉइंट पे कैसे निकालेंगे? 1 x को 1, y को -1 और z को 2 रखकर याच्यात x ला 1 ठेवायचं, y ला -1 ठेवायचं आणि z ला 2 ठेवायचं, तर त्या पॉइंट वरतीचं नॉर्मल भेटून जातं आपल्याला. सो दिस इज द substitution and this is normal to the surface S1 or phi 1 at the point 1 - 1 2. तशाच पद्धतीने phi 2 साठी नॉर्मल काढायचा. हा phi 2 आहे, याचा नॉर्मल काय असणार आहे? del phi 2, del ऑपरेटिंग ऑन phi 2. याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x किती होईल? 4y जशाला तसं x स्क्वेअरचा 2x. सो इट इज 2x इंटू 4y इज 8xy. याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x 0 0. सो इन टोटॅलिटी partial derivative of this with respect to x is only 8xy. त्याचा partial derivative with respect to y 4x square, y चा derivative 1, 4x square plus 0 minus 0, 4x square only. with respect to z किती होईल? 0, z क्यूबचा 3z स्क्वेअर आणि 0. सो इन टोटलिटी इट इज 3z स्क्वेअर. सो दूसरे सरफेस का भी नॉर्मल निकाल लिया है, उसका ग्रेडियंट निकालकर. अब उसे स्पेसिफिक पॉइंट पे निकालना है तो वो पॉइंट सब्सटीट्यूट कर दिया है. x ला 1, y ला -1, z ला 2 ठेवून दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस phi 2. और हमें ये दिया गया कि वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. एक सरफेस दूसरे सरफेस को परपेंडिकुलर है. दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल. तो क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, cos ऑफ 90 उनके बीच में 90 डिग्री एंगल रहेगा और cos ऑफ 90 0 होता है. cos ऑफ 90 0 है मतलब उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होने वाला है. आई रिपीट, whenever two surfaces are orthogonal to each other they make 90 degree angle, and if they make 90 degree angle then cos of 90 being 0, cos of 90 being 0, dot product will also be 0, because what is dot product? It is AB cos theta. So for theta is equal to 90 degree, cos 90 will be 0, so dot product becomes 0. So let us perform dot product and equate it to 0. Let us perform dot product and equate it to 0. This is del phi 1, this is del phi 2 at the point 1 minus 1 minus 1 2 and dot product. This is A1 B1 plus A2 B2, A2 B2 plus A3 B3 minus 8 into m minus 4, 4 into minus 4 is minus 16 and 12 into 2 is 24. So it is minus 8m plus 32 minus 16 plus 24. So how much it is? minus 8m. 32 मधून 16 गेले, 16 उरले, 16 आणि 24 40. 8m plus 40 is equals to 0. So adding
8m on both sides, we get 8m is equals to 40. So m is equal to 5. So for n is equal to 1 and m is equal to 5, this surface will be perpendicular to this surface at the point 1, -1, 2. Dear students, if you have any question, please ask. These are applications of gradient. Any questions, dear students? मॅम हेच एकदा रिपीट करा ना, हे इतकंच पाठ एकदा रिपीट करा ना. इथे आपण काहीच केलेलं नाही आहे. दोन लेट मी टेल यू वन थिंग, जर प्रत्येक पार्ट आपण असेच रिपीट करत बसलो तर आपला सिलेबस कधी कंप्लीट होईल. मी तुम्हाला व्हिडिओ देतेय, नाही मॅम ते शेवटची स्टेप. नोट्स देते आहे, कारण वेळ याच्यातच कन्झ्युम व्हायलाय. दोन सरफेसेस दिलेले आहेत, त्यांच्यातलं ह्या पॉइंट वरतीचा अँगल 90 डिग्री आहे. तर एम आणि एन ची किंमत काढायची होती. पहिल्या सरफेसचं ग्रेडियंट त्याचा नॉर्मल असतं, तो पॉइंट सबस्टिट्यूट केला आणि तिथली नॉर्मल काढली. दुसऱ्या सरफेसचं डेल ऑफ ग्रॅड काढलं, ते नॉर्मल डिनोट करतं, त्याच्यात तो पॉइंट इन्सर्ट केला, त्या सरफेसवरतीचा त्या पॉइंटवरतीचा नॉर्मल आला. हे दोन्ही नॉर्मल ऑर्थोगोनल आहेत, कारण सरफेस ऑर्थोगोनल आहेत. मग ऑर्थोगोनल आहे म्हणून डॉट प्रोडक्ट 0 होईल. डॉट प्रोडक्ट 0 होईल कारण त्याच्यात 90 डिग्री अँगल आहे अँड कॉस ऑफ 90 इज 0, आणि म्हणून डॉट प्रोडक्ट त्यांचं 0 होईल. मग डॉट प्रोडक्ट काढण्यासाठी आपण दोन्ही वेक्टर घेतले. हा एक वेक्टर, हा दुसरा वेक्टर, हा एक वेक्टर, हा दुसरा वेक्टर. डॉट प्रोडक्ट कसा काढतो? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 ने. तर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0. तर इथून याला सॉल्व करून m इज इक्वल टू 5 भेटलंय. Therefore, m is equal to 5 and n is equal to 1. This surface will be normal to this surface at the point 1, -1, 2. Dot product 0 असतं तर केव्हा 0 असतं? त्यांच्यात 90 डिग्री 0 अँगल आहे आणि cos 90 0 असल्यामुळे डॉट प्रोडक्ट 0 इक्वेट केलं. इज इट क्लिअर? Am I audible, dear students? Is it clear? Yes ma'am. Answer your roll call. Yes, ma'am. धनश्री, प्रेझेंट मॅम. समजलं का धनश्री? हो मॅम. साक्षी, Present, ma'am. शुभम, प्रेझेंट. अभिषेक, सादिक, Yes ma'am. नितिन, पूजा, योगिता, आकाश, Yes, ma'am. Present ma'am. योगिता आहे का पूजा आहे? Yogita, ma'am. Yogita is present. आकाश, Present ma'am. हर्ष. प्रेझेंट मैम. हर्ष, समझ में आ गया आज का डिस्कशन? हो मैम. यस.